अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? अस्सलाम वालेकुम जी क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. Kindly open page number 168. जी, adjustment messages. Okay, when a company receives a claim and decides to respond favorably, the message is called an advertisement. Underline कर लें इसको. यानी जब कंपनी एक क्लेम को रिसीव करती है और उसको अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स देती है, तो उस मैसेज को हम एडजस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से अंडरलाइन कर लें. Most businesses make adjustments promptly. They replace merchandise, refund money, extend discounts, send coupons, and repair goods. In fact, social media have shortened the response time drastically to mere hours, not days. Businesses grant adjustments to legitimate claims for two reasons. ठीक है, अब यहाँ पे businesses जो है वो grant देती हैं, grant adjustment देते हैं to legitimate claims for two reasons. उसकी reasons कितनी है? दो reasons हैं इसलिए वो देते हैं. Number one is first, contract and tort law protects consumers for recovery of damage. So if, for example, you find an insect in a package of frozen peas, the food processor of that package is bound by contractual law to replace it. Okay? यानी अगर आपको एक पैकेट देते हैं, फाइंड एन इंसेक्ट इन पैकेज ऑफ फ्रोजन पीस. ठीक है, फ्रोजन पीस जो आप सेल कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई इंसेक्ट नजर आता है तो एज अ बिजनेसमैन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रिप्लेस करके दें. Second, most organizations generally want to satisfy their customers and retain their business. कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जस्ट उनको सेटिस्फाई करते हैं और अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं. In responding to customer claims, you must first decide whether to grant the claim. ठीक है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप ग्रांट देंगे उनको, यानी उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर आप एक नया पैकेट देंगे या नहीं. When you say yes, your adjustment message will be good news to the reader. यानी अगर आप कहेंगे जी हम ग्रांट देना चाह रहे हैं तो it will be a good message for you. Deliver the good news by using the direct strategy. When your response is no, जब आपका response नहीं होता है, the indirect pattern might be more appropriate. तो ऐसी सूरत में आप indirect pattern को use करेंगे. ठीक है, यू हैव 3 गोल्स इन एडजस्टमेंट मैसेजेस. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करने ऑब्जेक्टिव के लिए कि एडजस्टमेंट के हवाले से यू हैव 3 गोल्स. आपके 3 गोल्स हैं. नंबर 1, रेक्टिफाइंग द रॉन्ग. ठीक है, रेक्टिफाइंग द रॉन्ग इफ वन एग्जिस्ट. अगर एक ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, रेक्टिफाइंग द रॉन्ग, तो आप रॉन्ग को रेक्टिफाई कर रहे हैं. रीगेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर फ्रॉम प्रमोटिंग फर्दर बिजनेस. A positive adjustment message follows the direct strategy described in the following right plan. उसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं एडजस्टमेंट मैसेजेस का. एक प्लान बनाते हैं. उस प्लान में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाइन देते हैं. सब्जेक्ट लाइन जो है ये ऑप्शन है. आइडेंटिफाई द प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रेफर टू द मेन टॉपिक. ठीक है, फिर है ओपनिंग, ग्रांट द रिक्वेस्ट और अनाउंस द एडजस्टमेंट इमीडिएटली. Number 3, body, provide details about how you are complying with the request. Try to regain the customer's confidence. Apologize if appropriate, but don't admit negligence. ठीक है, बात क्लोजिंग है. End positively with a forward-looking thought. Express confidence about future business relations. Include a sales promotion if appropriate. Avoid referring to unpleasantness. Okay? Unpleasantness. यानी जब हम मैसेज को एडजस्ट करते हैं, जब हम मैसेजेस को एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाइन देते हैं, उसके बाद ओपनिंग है, फिर बॉडी है और आफ्टर दैट देयर इज अ क्लोजिंग. ठीक है, अब हम देखते हैं रिवीलिंग गुड न्यूज अप फ्रंट. ठीक है, सबसे पहले अगर हम उनको जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पीस का एक पैकेज दिया. ठीक है, उसमें कोई इंसेक्ट निकला है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये गुड न्यूज है. अब गुड न्यूज को हम सबसे पहले रखेंगे. Don't dwell on what went wrong.
present the good news immediately. When Kimberly Lou responded to the claim of customer Optima Ventures about the missing shipment, her first draft, shown at the top of video, was angry. No wonder. No wonder Optima Ventures apparently have provided the wrong shipping address and the goods were returned. Once Kimberly and her company decided to send a second shipment, however, she had to give up the anger. Her goal was to regain the goodwill and the business of the customer. If you decide to comply with the customer's claim, let the receiver know immediately. यानी अगर आप फौरी तौर पर कस्टमर के क्लेम को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसको रिप्लेस करके देना चाह रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर कस्टमर से रब्ता करें. Don't begin your message with a negative statement. Negative statement के साथ अपने मैसेज को begin ना करें. We are very sorry that you are having trouble with your dishwasher. This approach reminds the reader of the problem and may rekindle the unhappy feeling experience. ठीक है, हमें सबसे पहले ये communication because we are dealing with communication skills, तो communication skills को देखते हुए हम यही सोचते हैं कि जो इफेक्ट हमारी कम्युनिकेशन का उस पर पड़ रहा है वो एक पॉजिटिव रहे. ठीक है, we are dealing with them. This approach reminds the reader of the problem and may rekindle the unhappy feeling experienced when the claim was written. Instead, focus on the good news. इसके बगैर इसकी बजाय हम एक अच्छी न्यूज़ पे फोकस करें. The following openings for various messages illustrate how to front load the good news. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फ्रंट लोड यानी हम सबसे पहले जो न्यूज़ रखते हैं उसको किस तरह से हम पहले गुड न्यूज़ देंगे. You are right. We agree that the warranty on your American Standard Model dishwasher should be extended for 6 months. ठीक है, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे. ठीक है, you will be receiving portable Admiral. You will be receiving a portable Admiral microwave oven, A1 appliance service, 200 Orange Street, Pasadena, where it will be repaired at no cost to you. In announcing an adjustment, do so without a grudging tone, even if you wonder whether the claim is legitimate. Once you decide to comply with the customer's request, do so happily. Avoid half-hearted or reluctant responses. Although the American Standard dishwasher works well when used properly, we have decided to allow you to take yours A1 appliance service for repair at our expense. अगर आप गुडविल के मैसेज दे रहे हैं तो आप इस तरह से हमको कहेंगे कि ये चीज जो है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं या इसकी रिपेयरमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो हम मीट करेंगे इसकी. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनिंग कंप्लायंस इन द मैसेज बॉडी. Explaining compliance in the message body. In responding to claims, most organizations want to do more than just make the customer happy. They want to stand behind their products and services. They want to do what is right. ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, जो एक ठीक काम है उसको करना चाह रहे हैं. ठीक है, in the body of the message, explain how you are complying with the claim. ठीक है, मैसेज की बॉडी में आप ये बता सकते हैं कि आप किस तरह से क्लेम को कंप्लाई करने जा रहे हैं. In all but the most routine claims, also seek to regain the customer's trust. You might reasonably expect that a customer who has experienced difficulty with the product, with delivery, with billing, or with service has lost faith in your organization. Okay? आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने किसी के साथ एज अ बिजनेस प्लान उसको अच्छी तरह से डील नहीं किया तो आप you might lost your faith in your organization. Okay? Rebuilding that faith is important for future business. फ्यूचर के बिजनेस के लिए जरूरी है कि लोगों का आप पे जो है ट्रस्ट वो बहाल रहे. How to rebuild lost confidence depends on the situation and the claim. If procedures need to be revised, explain the changes you will make. If a product has defective parts, tell how the product is being improved. If service is faulty, describe genuine efforts to improve it. ठीक है, उसके बाद sometimes the problem is not with the product but with the way consumers use it. कुछ छुट्टियां ऐसी भी होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं होता लेकिन जो कस्टमर है उसको जब यूज करते हैं तो वो केयरलेसली यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाती है. ठीक है,
ऐसी सूरत हाल में in other instances customers misunderstand warranties or inadvertently cause delivery and billing mix-up. Remember that rational and sincere explanations will do much to regain the confidence of unhappy customers. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिसाइडिंग वेदर टू अपोलोजाइज. ठीक है, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम इस सूरत हाल में हम अपोलोजाइज करें या फिर ना करें. Whether to apologize is debatable. Attorneys generally discourage apologizes, fearing that they admit responsibility and can trigger lawsuits. ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो उसको नहीं इसको रिकमेंड करते कि ऐसे सूरत हाल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टोटली आप पे चले जाती है, क्योंकि जो कस्टमर हैं वो अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तब भी अपोलोजाइज की जरूरत नहीं, आप हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबल उस सूरत. ठीक है, 36 US states have passed apology laws that allows an expression of regret without fear that those statements would be used as a basis for liability in court. Some business writing experts caution that apologies are counterproductive and merely remind the customer of unpleasantness. If, however, apologizing seems natural, do so. Okay? अगर आपको ये ठीक लग रही है तो आप इसको कर सकते हैं. People like to hear apologize. लोग जो है वो apologize करना चाहते हैं. It raises their self esteem. ऐसे में लोग जो है उनकी जो इज्जत नफ्स है वो ज्यादा हो जाती है, यानी वो अपने आप को काबिल इज्जत समझते हैं कि दूसरे बंदे ने जो है वो अपोलोजाइज कर लिया. It shows the humility of the writer and act as a form of psychological compensation. Don't, however, fall back on the familiar phrase, "I'm sorry for any inconvenience we may have caused." It sounds mechanically and insincere. कि अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट बोलते हैं तो ये इसको अंडरलाइन भी कर लें देखने के लिए कि अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट बोलते हैं तो ये इनसिंसियर के मीनिंग में भी आ जाती है. Instead, try something like this: "We understand the frustration our delay has caused you," or "We are sorry you didn't receive better service." If you feel that an apology is appropriate, do it early and briefly. You will learn more about delivering effective apologies. Okay? The primary focus of an adjustment letter should be on how you are complying with the request, how the problem occurred, and how you are working to prevent its recurrence. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग सेंसिटिव लैंग्वेज. जब आप सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होता है, द लैंग्वेज ऑफ एडजस्टमेंट लेटर्स मस्ट बी पर्टिकुलरली सेंसिटिव बिकॉज कस्टमर्स आर ऑलरेडी अपसेट. देयर आर सम डॉट्स. ठीक है, कस्टमर जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो अगर आप उसके साथ रफ लैंग्वेज बोलेंगे तो डेफिनेटली आपका और जो कस्टमर है उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ रूड हो जाएगा. ऐसी सूरत में लैंग्वेज के मामले में थोड़े सेंसिटिव रहें. The language of adjustment letters must be particularly sensitive because customers are already upset. There are some don'ts. Don't use negative words or phrases: trouble, regret, misunderstanding, fault, error, inconvenience, your claim. Don't blame customers. Customer को blame भी ना करें, even when they may be at fault. अगर वो fault पे भी हों. Don't blame individuals or departments within your organization. It's unprofessional. Okay? Don't make unrealistic promises. You can't guarantee that the situation will never recur. To regain the confidence of your reader, consider including resale information. Describe a product's features and any special application that might appeal to the reader. Promote a new product if it seems appropriate. कि अगर ये आपको ठीक लगे तो आप न्यू प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं. Showing confidence in the closing. Close मैसेज को क्लोज करते हुए कॉन्फिडेंस पे शो करें कि आप उनको कस्टमर को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं. And positively by expressing confidence that the problem has been resolved and that continued business relations will result. You might mention the product in a favorable light, suggest a new product, express your appreciation for the customer's business, or anticipate future business. It is often appropriate to refer to the desire to be of service and to satisfy customers. Notice how the following closing illustrates a positive, confident tone. Okay. Thanks for writing. Your satisfaction is important to us. We hope that this refund check convinces you that service to our customer is our number one priority. You are most helpful in informing us of the situation and permitting us to correct it. We appreciate your thoughtfulness in writing to us. Okay. उसके बाद हम देखते हैं गुडविल मैसेजेस. Okay. गुडविल के मैसेजेस जो हैं वो आप किस तरह से भेज सकते हैं.
Finding the right word to express feelings is often more difficult than writing routine business documents. That is probably why writers tend to procrastinate when it comes to sending goodwill messages, expressing thanks, recognition and sympathy. ठीक है, जब आप goodwill messages भेजते हैं तो उसका क्या असर होता है? Sending a ready-made card, picking up the telephone may seem easier. Remember though that the personal sentiments of the sender are more expressive and more meaningful to reader than our printed cards or oral messages. Taking the time Taking the time to write lends more importance to well-wishing. Personal notes also allow the recipient to read it, savor, and treasure them. Goodwill notes should always be dispatched promptly. These messages are easier to write while the situation is fresh in your mind. They also mean more to the recipient. Prompt thank you note carries the hidden message that you care and the reader is important to you. Instead of writing plans for each goodwill message, whether thanks, congratulations, praise, or sympathy, we recommend that you concentrate on the 5 S's. यानी 5 S's कौन से हैं? इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे 5 S's. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए नोट डाउन कर लें 5 S's. Number 1 is selfless. Number 1 is selfless. Focus the message solely on the receiver, not the sender. When praising others, avoid such comments as "I remember when I." Second S is specific. Be specific. Personalize the message by mentioning specific incidents or characteristics of the receiver. Telling a colleague great speech is much less effective than great story about McDonald's marketing in Moscow. Take care to verify names and other facts. Sincere. Be sincere. Let your words show genuine feelings. Rehearse in your mind how you would express the message to the receiver orally. Then transform that conversational language to your written message. Avoid pretentious, formal, or flowery language with the utmost pleasure. I extend felicitations on the occasion of your firm's 20th anniversary. Okay, इसके बाद spontaneous में आप देख सकते हैं. Keep the message fresh and enthusiastic. Avoid canned phrases. Congratulations on your promotion. Good luck in the future. Strive for directness and naturalness, not creative brilliance. ठीक है, इसके बाद short में हम देख सकते हैं. Although goodwill messages can be long as needed, try to accomplish your purpose is only a few sentences. Remembering an individual is most important. Such caring does not require documentation or wordiness. Individuals and business organizations often use special note cards or stationery for brief messages. ठीक है, उसके बाद saying thank you. ठीक है, after that जब आप thank you का मैसेज देते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है? When someone has done you a favor or when an action merits praise, you need to extend thanks or show appreciation. Letter of appreciation may be written to customers for their orders, to hosts for their hospitality, to individual for kindnesses performed, to employees for a job well done, and especially to customers who complain. After all, whether in social media posts, by email, or on paper, complaints are actually providing you with free consulting report from the field. Complainers who feel that their complaints were heard often become the greatest promoters of an organization because the receiver will be pleased to hear from you. You can open directly the letter. Thanks the speaker who addressed a group of marketing professionals, although such thank you notes can be short. This one is little longer because the writer wants to lend importance to the receiver's efforts. Notice that every sentence relates to the receiver and offers enthusiastic praise. By using the receiver's name along with contractions and positive words, the writer makes the letter sound warm and conversational. ठीक है, तो वह हम देखते हैं expressing thanks for a gift. किसी gift के लिए आप जब thanks बोलते हैं तो वो किस तरह से? When expressing thanks, tell what the gift means to you. Use sincere and simple statement. Okay, सूरज ने
सिंपल स्टेटमेंट काफी हो जाती है. सेंडिंग थैंक यू फॉर अ फेवर, अगर फेवर मिलती है आपको तो उस वक्त क्या करते हैं, इन शोइंग एप्रिसिएशन फॉर अ फेवर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द जेस्चर टू यू, की इम्पोर्टेंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेंडिंग थैंक्स फॉर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी के सिलसिले में अगर आप थैंक्स बोलते हैं तो वो किस तरह से, when you have been a guest, send a note that compliments the fine food, charming surroundings, warm hospitality, excellent host, and good company. Recognizing employees for their contributions. Okay? A letter that recognizes specific employee contributions makes the person feel appreciated, even if it is not accompanied by a bonus check. Okay? By replying to goodwill messages, गुडविल मैसेजेस को आप रिप्लाई किस तरह से कर सकते हैं. शुड यू रिस्पॉन्ड व्हेन यू रिसीव अ कंग्रेचुलेटरी नोट और अ रिटन पैड ऑन द बैक. ठीक है, यानी आप बैक पे आप कोई मैसेज राइट करना चाहते हैं या फिर आप किस तरह से इसको गुडविल के मैसेजेस को आप रिप्लाई किस तरह से कर सकते हैं. बाय ऑल मींस these messages are attempts to connect personally. They are efforts to reach out to form professional and or personal bonds. Failing to respond to notes of congratulations and most other goodwill messages is like failing to say you are welcome when someone says thank you. Responding to such messages is simply the polite thing to do. Do not though minimize your achievements with comments that suggest you don't deserve the praise or that the sender is exaggerating your good qualities. Okay? Answering a congratulatory note, ठीक है, इसके बाद आप एक congratulatory note जो है उसको आंसर किस तरह से कर सकते हैं. In responding to congratulations, keep it short and simple. Thanks for your kind words regarding my award, and thanks too for forwarding me the link to the article online. I truly appreciate your warm wishes. Okay. By responding to praise, when acknowledging a pat on the back note, use simple words in conveying your appreciation. Your note about my work made me feel good. I am grateful for your thoughtfulness. Okay. उसके बाद देखिए हम expressing sympathy. अगर आप कोई sympathy जो है उसको express करने जा रहे हैं तो इस तरह से आप उनके साथ sympathize होंगे. Most of us can bear misfortune and grief more easily when we know that others care. Sympathy notes, though, are probably more difficult to write than any other kind of message. Commercial sympathy cards make the task easier, but they are far less meaningful than personal notes. Grieving friends want to know what you think, not what Hallmark's card writers think. To help you get started, you can always glance your through cards expressing sympathy. They will seem to supply ideas about the kind of thoughts you might wish to convey in your own words. In writing a sympathy note, refer to the death or misfortune sensitively, using words that show you understand what a crushing blow it is. In the case of death, praise the deceased in a personal way, offer assistance without going into excessive detail, and end on a reassuring offer assistance without going into excessive detail. ठीक है, उसके बाद सेंडिंग कंडोलेंस. कंडोलेंस के सिलसिले में ये तो पहले तो हमने देखा कि हम सिंपैथी किस तरह से उनके साथ करते हैं, सिंपैथाइज करते हैं जब हम एक अच्छी पोजीशन में उनको देखते हैं. अब कंडोलेंस जब हम किसी चीज का अफसोस करते हैं, mention the loss, tactfully recognize good qualities of the disease, assure the receiver of your concern, offer assistance, and conclude on a reassuring note. We are deeply saddened, Gail, to learn of the death of your husband. Warren's kind nature and friendly spirit endeared him to all who knew him. He will be missed, although words seem empty in expressing our grief. We want you to know that your friends at Quadcom extend their profound sympathy to you. If we may help you or lighten your load in any way, you have but to call. We know that the treasured memories of your many happy years together, along with the support of your family and many friends, will provide strength and comfort in the months ahead. Okay? well, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इज ईमेल अप्रोप्रिएट फॉर गुडविल मैसेज? क्या जो ईमेल है वो गुडविल मैसेज के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं? ठीक है. In expressing thanks or responding to goodwill messages, handwritten notes are most impressive. However, if you frequently communicate with the receiver by email and if you are sure your note will not get lost, then sending an email goodwill message is acceptable. Okay, तो ऐसी जरूरत नहीं, goodwill का जो मैसेज है वो acceptable है.
According to the Emily Post Institute, to express sympathy immediately after learning of a death or accident, you might precede a phone call or a written condolence message with an email. Email is a fast, non-intrusive way to show your feelings. However, advises the Emily Post Institute immediately follow with a handwritten note. Remember that email messages are quickly gone and forgotten. Handwritten or printed messages remain and can be severed. Your thoughtfulness is more lasting if you take the time to prepare a handwritten or printed messages on note paper or personal stationery. ठीक है, अब ये आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. We have completed our chapter number 6. जी क्लास इसमें से कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो. No, ma'am. Everything is clear to you? All of you? Is everything clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. डिस्कस करें. ठीक है. मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही. जी आपके पास 10 मिनट्स हैं, इसमें आप रिवाइज करें लेक्चर को, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा. और क्लास एक चीज नोट करते जाएं. अब मैम आपकी आवाज वगैरह नहीं क्लियर आई, पता नहीं आपने क्या बोला. चलिए नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं बात.